Okay. So, so last session we have done the time intelligence calculation. Have you all completed the task that I had given yesterday? No? Yes. No, sir, sorry. Oh, okay. Yeah, no worries. Try to do this over the weekend. We will review next week. Okay. All right. Sure. Now, uh, let's continue with the remaining ones under time intelligence, and then we'll move to the text calculation. So, in this, we have total YTD. Now, what is a YTD or QTD or MTD? Any one of you who is familiar with what is YTD, QTD? So year to date and quarter to date. Correct. So what is year to date? That means it will go on adding, that is the rolling total till the year ends. Yeah, and then the new year starts and then it would start again. Yeah. So if you want to find out the rolling total for some case based on year, quarter, month, or day, year, quarter, or month, then you can use total YTD, total QTD, or total MTD. Okay. So let's see how we will use it here. And let's create a new measure. So first we will try with total YTD. Okay. So I'll say this measure as sales YTD. The simple measure that we need to use is total YTD. Yeah. We need to give the measure, that is, I need the total of sales, right? And then the date field. That's it. Once you add this, sorry, I added an addition closing bracket, and it's done. Yeah. So now if you see what it is doing for September, as our data start from September, it is giving me the same value. And then if you go to the next row, 92,95611 is being added to the previous one, right? So on it goes on adding till the year ends because it is YTD, year to date. Yeah. After that, when the new year starts with January, it again starts, right? So if you see for January, it's displaying me the same value. Then for February, it's adding January and February, then March, April, so on. It goes on adding till the year ends. Yeah. Now, if you look at the total, it's not the total for all the YTDs. It's the total for the latest YTD. And how do you calculate what is the latest? So the max date that is available in your data, that would be your latest date, right? So based on that, you can use it like this. Yep. So this is total YTD. Now, similarly, if I use total QTD, yeah. So what will happen? It will go on adding till the quarter ends. When the new quarter starts, again, it will go on adding. Yeah. Okay. Yeah. So that is what total QTD is. Yeah. So total YTD, we saw that it will go on adding, rolling up the total. Yeah. So we call it as a rolling total. It will go on adding the months till the year ends. That is YTD. If it goes on adding the months till the quarter ends. Yeah. So it will be called as total QTD. Similarly, you have total MTD as well. Okay. So here, if you see the total MTD gives me the similar kind of results. Why? Because we have monthly data. Yeah. So what is MTD? In MTD, what will happen?
each of the months would go on adding. Each of the days would go on adding the total till the month ends. Yeah. And as we have only months here, it is displaying me the same total. Yeah. That is what total MTD is. Yeah. That's what total QTD, YTD, and MTD would be. Yeah. Any questions, anyone, for uh, the three measures that we covered? I'll switch back to total YTD. Okay. Yep. Any questions for total YTD, QTD, or MTD? No. Okay. Now the next two are dates between and dates in period. Yeah. So what is this dates between and dates in period? For example, you need from the max of date, you need the last 4 months of total. Yeah, which should be dynamic. Yeah, so you need only the last 3 months or last 4 months, irrespective of whether it is a quarter, year, anything. Yeah, when I say irrespective of quarter, that means if I say last 3 months, it should go from December, November, and October. Yeah. If my maximum is November 14, it should go like last 3 months, November, October, and September, like that. So if you need the total of the sales in that particular manner, then you can use dates between and dates in period. Yeah. So let's see how we will use it. First, we will see dates in period. Yeah. Again, you have to use the same formula. Calculate sum of sales because dates between or dates in period is a filter. Yeah. So I'll use sum of sales. Then I'll use dates in period. I'll give the date. Okay. Then it says the start date. Yeah. So here dates in period, it should be a start date. Yeah. Now let's say my start date would be I need from August till the max of date. Yeah. So for example, you have a certain month that is set. From that month, you need the um, total for till the max date. So as the months gradually progress, the range would again increase. Yeah. So you need to enter August 2014 manually, for example. So how will you do that is using date. So 2014 August 1st day. Yeah, so this is my start date. My end date would be the maximum of the date. What is maximum of date? It would return me the latest date from my table. Yeah, not from the system. That is max of today would be like max of a particular column. It will not return me the latest date, but max would return you the latest date from the table. So in future, if you have data for 2015, right? So you have till March 2015, for example. So March 2015 would be the max. Yeah. Now after this, what you need to enter is interval. Yeah. So I'll say month because I need the month wise calculation. So here, if you see, it is now displaying me the total of August to December. Yeah. If you want to validate it, let's see that. August, September, October, November, and December. 4202241. That is what it is displaying here. Yeah. If I change it, let's say I need from September. So it will display me like this. Yeah. If I change the month to quarter, what will happen? It will still display me the same thing. Yeah. Because the range that I have selected is irrespective of that. Yeah. So this is dates in period. Again, dates between. Let's see what is dates between.
It's some of values dates between. Now here again, I need to provide the date field. Yeah. So you may have observed that most of the date calculations uses calculate as a DAX function, and in the filter, you have to provide the date field. Yeah. So once you provide the date field, you will say the start date. Yeah. Let's say again here, I will say date. Or instead of adding it manually, let's create a variable, store a value there, and then return that value here. Okay, return that variable here. So variable, I'll say start date. Yeah. So this green color is your variable name. How to create a variable? You can just write in var space, give the variable a name, and then is equal to. Yeah. I'll tell you why I'm creating a variable. Okay. I'll say minimum of um, date. Then if I have to use this variable, I'll say return. Okay. Let's create one more variable. So I'll hit Alt Enter. Variable end date. I'll say max of date. Okay, so two variables I have. Now, what I can do here is I can say the start date and the end date. Yeah, so I can call the variables like this and close the bracket. Yeah. So now what will happen? It will give you exactly the same kind of sales results, but if you select two, it will give you the rolling total for that. Yeah. So you can say dates between is similar to total YTD or QTD, but irrespective of the calendar range. Yeah. So whatever you select, it will give you the total accordingly. Yeah. But the most valuable is dates in period. Yeah. I showed you only one in dates in period, the start date and end date. What you can do is, let's say I will say max of date would be my start date. Okay. Then what I can do here is dates and period. I will say go back last 4 months. That's why the interval was given. Yeah. Now what this does is last 4 months. So what happens if I take the max of date, that is December. Yeah. So for December, maximum of date would be December 2014. So from December 2014, last 4 months, it gives you the calculation. For November, last 4 months, it gives you the total. Yeah. And so on. Okay. So that's the difference between dates in period and dates between. Dates between can give you the total between two dates, right? So if you fix the date between the two dates, it would give you the results. Dates in period is you can define a maximum date, yeah, and then from that maximum dates, how many months back do you need the total, or how many months further you need the total, how many back years you need the total for, or how many years in the future you need the total for, yeah, and that would display accordingly row by row. Yeah. So that's the difference between dates in period and dates between. Yep. Any questions? Anyone? सर सर आपने डेट्स बिटवीन में सर आपने 13 दिया था, सितंबर 13 और दिसंबर 13 ना? मिनिमम और मैक्सिमम तो वो डायनामिक हो जाता है। अगर मुझे आपका डेटा पैरामीटर्स में नहीं समझ में आ रहा है, जो पैरामीटर्स आप पास करते हैं ना, जैसे हाँ हाँ वो नहीं समझ में आते हैं। पैरामीटर्स हमने क्यों यूज किया, हम ऐसे भी नॉर्मली भी लिख सकते हैं, लेकिन पैरामीटर्स हाँ, इसलिए यूज
यूज किया ताकि यहाँ पे इजी जाए। या हम्म, ये एक एग्जांपल है। वेरिएबल्स पैरामीटर्स की जगह पे वेरिएबल्स बोलेंगे। सो वेरिएबल्स का और एक एग्जांपल ये है कि लेट्स से आपको एक फिल्टर्ड वैल्यू का मेजर बनाना पड़ रहा है, फिर आपको एक टोटल का मेजर बनाना पड़ रहा है, और थर्ड मेजर आप बनाओगे द फिल्टर्ड मेजर डिवाइडेड बाय द टोटल मेजर, है ना। तो इससे हम्म, क्या हो रहा है, 3 मेजर आपको बनाने पड़ रहे हैं। इंस्टेड हम्म, ऑफ दैट हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल यूज कर सकते हैं। वेरिएबल यूज करके हम वो जो फर्स्ट 2 मेजर्स है वो वेरिएबल में स्टोर करेंगे। कैलकुलेशन वेरिएबल ऐसे ही नाम दे देता हूँ मैं। सो फर्स्ट में क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट्स से यूरो। इसमें मैंने स्टोर किया फिल्टर, ठीक है, कंट्री के लिए। ओके, ये मेरा एक वेरिएबल हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, सॉरी आई एक्सीडेंटली हिट एंटर, ऑल्ट एंटर करना। तो अभी अगर मैं वेरिएबल नहीं बनाता तो मुझे क्या करना था, ये एक सेपरेट मेजर हो जाता, ये मैं हम्म, निकाल देता था। इसके बाद एक टोटल का सेपरेट मेजर, और एक थर्ड मेजर अगेन फॉर डिवाइडिंग द 2 मेजर। सो इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो 2 अलग अलग मेजर्स थे वो मैं वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। अभी जैसे वेरिएबल फॉर टोटल हो गए, सो यहाँ पे मैं क्या स्टोर करूंगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अब इन दोनों वेरिएबल को मैं रिटर्न करूंगा मेरे फाइनल कैलकुलेशंस में, विच इज डिवाइड यूरोप बाय टोटल, राइट, 0। तो इससे क्या हो गया, मैंने 3 मेजर्स क्रिएट करने के जगह पे एक ही मेजर क्रिएट किया और उसमें सारी चीजें डाल दी। अगर आपको ऐसा रेफरेंस करके बनाना है या फिर कोई कैलकुलेशन लिखना है जिसमें आपके 2-3 मेजर्स रहेंगे, सो आप इसको एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हो। सेम वे यहाँ पे मैं ये डायरेक्टली यहाँ पे भी ले सकता हूँ, मिनिमम को यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टार्ट डेट में यहाँ पे ले हम्म, सकता हूँ, नो इश्यूज। या बट टू हम्म। अवॉइड कंफ्यूजन, टू अवॉइड अ बिग कैलकुलेशन फॉर्मूला, सो दैट इट्स नॉट दैट इजी टू रीड, हम उसको वेरिएबल में स्टोर करके फिर उसको यहाँ पे रिटर्न कॉल करते हैं। तो सर यहाँ पे आपने मिनिमम फाइनेंशियल डेट लिया वेरिएबल स्टार्ट डेट में, और एंड डेट में आपने मैक्सिमम फाइनेंशियल डेट ली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो सिलेक्ट करोगे स्लाइसर में, उस हिसाब से वो मिनिमम और मैक्सिमम यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मुझे वही नहीं समझ में आ रहा, मतलब कैसे अगर आपने दिसंबर 14 में अगर आपने कर्सर रखा वहां पे क्लिक किया तो वो वहां से लेगा। हाँ, नहीं वैसा नहीं। अभी देखो, अ, यहाँ पे मैं डेट स्लाइसर लेता हूँ, ठीक है, मैंने बोल दिया बिटवीन, मैं इसको यूज करता हूँ बिटवीन, ठीक है। सो हम्म। अगर मुझे डेटा देखना है, सर फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा है मुझे। सो अगर मुझे डेटा देखना है फरवरी से हम्म, सितंबर तक, या तो ये मेरा रेंज हो गया। तो अब मैं यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्शन दे रहा हूँ स्लाइसर में कि मेरा मिनिमम और मैक्सिमम ये है, दिस इज द बिटवीन, ठीक है। तो हम्म। उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो उस रेंज के लिए आपको डेट्स बिटवीन का टोटल दिखेगा, 5593191, तो वो उतना ही टोटल दिखा है बिटवीन। मुझे क्या कहना है, अभी यहाँ पे आपने फिल्टर लगाया, दोनों दिया, मिनिमम भी दिया मैक्सिमम भी दिया, तो उसे पता था इसलिए उसके बीच बीच का जितना भी है उसने टोटल दिखाया। अभी फॉर्मूले में मिनिमम हमने सेलेक्ट किया कोई भी एक, तो अगर मैन्युअली मैक्सिमम। आपको फार्मूला डालना है तो वैसा आप डाल सकते हो, जैसे कि ये मैं डाल देता हूँ, ठीक है, 2014 अगस्त, ठीक है। इससे क्या होगा, फिर ये स्लाइसर उसको अफेक्ट नहीं करेगा।
right? August to September, तो total उसका दे देंगे. और हमने कुछ भी नहीं दिया तो फिर वो मैक्सिमम क्या लेगा, ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा. मतलब मिनिमम मैंने सेलेक्ट किया, मैक्सिमम क्या लेगा, कैसे लेगा? मैक्सिमम ऑफ डेट, जो भी मैक्सिमम रहेगा आपका टेबल में, लेटेस्ट डेट, इसलिए तो मैक्स दिया है ना. हम्म. मैक्स का मतलब ही वो है कि जो भी लेटेस्ट हो वो मुझे लेके दे दे फ्रॉम अ फील्ड. सिर्फ डेट के लिए नहीं, अगर आप मेजर के लिए भी मैक्स यूज करोगे तो उसमें से लेटेस्ट जो भी रहेगा वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू जो रहेगा वो देगा. This was about dates in period and dates between. Yeah. Now, let's go ahead with the text calculations. Okay. So time intelligence is done. I'll remove this. Let's start with text. Now, in text calculation, mostly we have seen this in our Power Query editor. Yeah. So in Power Query editor, we have seen how we can extract the length from a value of a field, how we can extract the first characters, last characters, that is right. Then you have range in Power Query editor, that is mid. Yeah. So these are very simple ones, but still let's go through that. Yeah. We also have trim, yeah, as a function. Okay. All right. So let's take the first one now. Text output. That means it should give me a row by row results, a fixed row by row results. Yeah. So in that case, I would create a calculated column. Yeah. When I was dealing with measures that are numbers, I was creating a calculated measure from the measure table. Yeah. Now I will create calculated column because I need text outputs. Okay. So let's remove all this from here. We will perform the text calculations on the field segment. Yeah, where is segment? No segment here. Title. This is the segment. Okay. So I will create the first column, which will give me the length for each of the values. Yeah. So we will perform all the text calculations in the same calculated column. Okay, I'll just go on replacing it. So length of title, which is easy. Yeah. So it would return me the length of each of the characters. Right now it is giving you 1600, which is incorrect because it has number values. We see the summarization is sum. Yeah. If you change this to don't summarize, you will get the exact results. Yeah. So here you have some, remove it, add it again, you get the results. So for channel partners, you have 16 length, right? For enterprise 10, like that. Okay. Now, if I say I need to extract the first 3 characters, yeah, or first 4 characters from the segment, yeah. So what I can do is if I need to extract the characters from the first, that is the left-hand side, I will use left. Yeah. So left, column name, and then the number of characters. There you go. Yeah. Similarly, from right-hand side, that is the last 4 characters, for example, I can use it like this. Last 3, last 2. Yeah. Anything, n number of characters. If you want to extract in this manner, you can do it. Yeah. Then you have mid. Mid is range. Yeah. So for example, I'll say that I need to extract
the text characters starting from the fourth position, and from the fourth position, I need to extract the next two characters. That's what I need to do. So I can say 4 and then 2. Yeah. So the first thing that you will add is the start position. From where do you need to start? So I'll say fourth position. Then from the fourth position, I need to extract 3 characters. So I'll say 3. Close the bracket, hit enter, and you'll get the results. Yeah. So if you see from the fourth character, that is 1, 2, 3, 4. From here it started, and then it extracted 3. N, N, E. That's here. Yeah. Same way here as well. ERP is extract. Okay. So if you want to extract characters from the mid of the text, or from the beginning of the text, or from the end of the text, you can use left, right, or mid. Yeah. Then you have trim, which is, we already know what the trim stands for. It would remove the white spaces from the beginning and the end of the text. Yeah. So here you don't see a change because there's no space before any of the values in our title column or at the end of the values. That's why it looks pretty similar. Yeah. Then the major one that you need to compare is, I'll say, text column 1. Yeah. This can be asked in interviews as well. What is the difference between replace and substitute, or find and search? Yeah, so these two comparisons they may ask. So first we will see what is find, then we will see what is search, and then replace, and then substitute. Okay, so find and search are similar. So let's do that first. Find. Now in find, what it is telling me, what is that you need to find? Yeah, so let's say I need to find the uppercase E. Okay, uppercase E. In which column do you need to find? I will say under title. Okay, from which position you need to start finding it? I'll say 1. Yeah, if the character is not found, then what you should need? I'll say I need 0. Yeah, so remember this find or search is going to give you the position number. Yeah, there's no text output here, but still we are using a calculated column. Why? Because we need row by row results. We don't need a summarized results. Yeah, if I say summarize results, it will calculate all together and then give me one single position. But I don't need that. I need the position of the uppercase E from each of the title values. Okay, so that's why I'm using a calculated column. Let's hit OK. Again, it's a number output. So this is don't summarize. It was by default there. Yeah. And this is the results. Yeah. Why I'm using text column 1? Because we need to compare it. So I'll again create a new one. Yeah. And then we will understand what is the difference. Okay. So let's create the other one, which is using search. Yeah. Again, the same thing. Yeah. Find text. I'll again use uppercase E. Within text, title, start position first, not return result, 0. Hit enter. It would be sum, so I will first change it to don't summarize from the summarization and then populate it here. There you go. Now, if you see the difference between the two, both are searching uppercase E. So which one do you feel is giving me the correct result for uppercase E? Yeah. Here 0 means it already has E, but it is not returning me the position. Why? Because it's a lowercase e. Yeah. This 1 represents where it found that character, where it found that text that you were searching for. So I was searching for the uppercase E. I found it in the first position here. That's why it is giving me 1. For the others, as I said, not found result should be 0. It is returning me that. Yeah. If I say instead of 0, it should return me blank. So it will go blank. There you go. Right. So that is how you can formulate it. Yes. सर गवर्नमेंट का ई अगर कैपिटल करेंगे तो
टेक्स्ट कॉलम 1 में क्या आएगा रिजल्ट 1? हाँ, अगर यहाँ पे ई अपर केस रहता तो यहाँ पे रिजल्ट 1 नहीं आता। ई कौन से पोजीशन में है? 1 वो 2 आएगा 3 4, 4। फोर्थ पोजीशन है, राइट? ऐसा। लेकिन अगर आप सर्च देखोगे, सर्च इज नॉट केस सेंसिटिव। या सो इफ they ask you the difference between find and search, the simple answer is find is case sensitive, search is not. Yeah, that is why search जब हम यूज कर रहे हैं तो even though e is in lower case और हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं upper case, it's still returning me the results because उसको केस मैटर नहीं करता इस सर्च फंक्शन के। Yeah, that's why it is giving me the results. ठीक है। अगर मैं बोलूं कि I need to start the search from 5th position, तो क्या होगा? So from the 5th, at which occurrence did it occur? It would give you that. That's why if you see for government, उसने पहले वाला E मिस कर दिया क्योंकि हमने start ही किया 5th position से. पोजीशन। So it is returning me the 8. Yeah. Now, if you have repeatedly the same character coming in the same value, first occurrence of the character would be your position. ठीक है। सेकेंड अकरेंस वोंट बी काउंटेड। इसीलिए जब मैंने इसको 1 किया, दैट मीन स्टार्टिंग पोजीशन 1, फॉर गवर्नमेंट इट रिटर्न मी 4 इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग मी 4,8, ऐसा नहीं देता, राइट? सो व्हेनेवर फर्स्ट टाइम दिस कैरेक्टर अकर्स, दैट इज व्हाट इट इज कैलकुलेटेड। क्योंकि चैनल पार्टनर्स में भी इफ यू सी, इट इज अपीयरिंग इन पार्टनर्स, या ई, but it is not returning me that position. So it always returns me the first occurrence of that character. Yeah. Let's say, what if we do a combination en? Will it return me the results? Yes. Yeah. E and n. यहाँ पे है en. Right. Anywhere else do we have en? No. That's why it is returning it like this. Yeah. So even not only one single character, but if you want to search for something specifically, you can do that using search. Okay, and return its position. Clear till here, everyone? Find and search. Okay. Let's see replace and substitute. Okay. For the first one, I would change this to replace. Yeah. So from the word replace, okay, we get to know now this is title. Old text means, I will say title. That is the field. Now here in replace, based on a position, I can change the text or the value. Yeah. So I'll say start from first position. Then the first 3 characters, I need to change it with something else. Yeah. So replaces based on position, you can change the text. Yeah. So first 3 characters, and it is not compulsory that if you are replacing 3 characters, you have to enter 3 characters. Right. Here it can be 2, 3, 4, and number. Yeah. So let's say I will say REPL for replace. Yeah. So you can see that I'm replacing 3 characters with 4. Right. 1, 2, 3, 4. Yeah. So let's see the result. What will happen? The first 3 characters for each of the values would be replaced with the static text REPL, and then the actual values would follow. Yeah. The remaining values. Yeah. So what we understand, replace is based on position, whereas substitute is based on a specific text that you enter. Yeah. So if I say substitute, I'll say title. Yeah. So the old text. So here you can enter the text. I will say again, let's replace en. Okay. I will replace en with the uppercase ENG, for example. Yeah. Now here is the instance number. So remember I explained you the occurrence. That means if it occurs for the first time, then replace it. If it occurs for the second time, then it would ignore. Yeah. So then it would return you the result, right? So same way here, let's say in one value, en is repeated n number of times, like two
two number of times. So if you see under channel partners, NE is there. Yeah. So let's change this NE. Yeah. So I'll say the second occurrence. That is the second instance. Yeah. So the number that you enter would be the instance number here. Yeah. Let's see the results. So here, if you see, the second instance is being replaced. The first instance, that is NE, is ignored. If I now say here 1, that is the first instance, it would replace it here. There you go. Okay. Understood replace and substitute, everyone? सर वो लास्ट पैरामीटर मैंडेटरी है क्या, 1 और सेकंड जो डाला है वो? हाँ, अगर आप नहीं डालोगे और एंटर करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ही लेगा. ओके सॉरी, बाय डिफॉल्ट दोनों ले लिया उसने. तो दोनों अकरेंस पे उसने चेंज कर लिया. अगर आप वो इंस्टेंस नंबर नहीं डालते हो, इग्नोर करते हो तो. ओके ओके. After this, yeah, we have covered this much. Okay. Now is lookup value. Yeah. What is a lookup value? Everyone is familiar with VLOOKUP in Excel? Yes, Right? sir. Yeah. So same VLOOKUP, we can use it here. Yeah. So let's take two tables. Okay. So for using lookup, it's very mandatory that you have one distinct table from which you need to bring the values in. Yeah. So it is similar to merge query that we do in the backend, right? In Power Query Editor, we did merge query, right? So it is similar. Let's take the column tools. Here I have the country name, right? What if I need to bring the column web? Yeah. I need to bring this column web inside the financial sample based on the country column. Yeah. So then I can go ahead and use lookup value. Yeah. So in Excel, what we do is first we match the columns, right? So we take the matching column from the existing table, then we hit comma, and then we go to the next table. We use the common column, and then we enter the index number of the column that we need. Correct? In lookup value, it's totally opposite. You first call out the column that you need, right? So here in our example, we need the web column, right? So we will call the web column first, then we will call the common column from the other table, right? Where the web column is, and then the common column in the existing table. Yeah, that's how we can do it. Let's see that. So I'll remove these three from financial sample. I'll take country. Okay. And then I will create a new column here. I'll say web URL. Okay. I'll use lookup value. Yeah. So if you see here, lookup value, the result column name. Yeah. So what is my result that I need? I need web, right? From the column tools. So I am using, yeah. So I'm using here the column tools table. Okay, I need the web column from the column tools table. So from the same column tools table, what is the country column? What is the common column? Sorry, it's country, right? So I'll use country. Then the common column from the existing table. What is the existing table? Financial sample, right? Search for country. It gives you the results. Yeah. If this result is not found, that means if there is no matching value, what should be the alternate result be? Yeah. That you can enter. So alternate result, let's say not found, like that. So this kind of alternate result also you can enter. That means you don't need to, like in lookup value, what you do, if it doesn't match, it returns you hash value or hash NA value or error, right? Error it returns. Then you apply if error and then give me the results, like that you do, right? So instead of that, in lookup value, you can just enter the alternate result. It can be blank, or if you want to enter a text not found, you can enter that as well. Or simply you can say NA. Yeah, something like that. You can hit enter.
Right, I need the results. Let's use it here. And you'll get the URLs. There you go. Right? So everywhere, wherever it was matching, it is giving me the results. Yeah. This is what lookup value is. Okay. सर वो टेबल प्रेजेंट है क्या वेब अभी वो एक मिनट वो कौन सा टेबल? नहीं अभी जो ये किया है ना हमने कंडीशन यानी हाँ कि हाँ, डेक्स फंक्शन में वो अवेलेबल है क्या एक मिनट डेक्स लुकअप फंक्शन वैल्यू। हाँ हाँ नहीं वो वेब कॉलम टूल वेब वो हाँ, ये प्रेजेंट है क्या हमने उसमें बनाया है। ये हमने टेबल बनाया है, या था एंटर डेटा यूज करके जो हमने टेबल हाँ बनाया था, ओके वो है ओके वो ये टेबल कॉलम टूल्स के अंडर है ओके कॉलम टूल्स के अंदर। यस, सो वहां ओके से हम कॉल करके फाइनेंशियल सैंपल वाले टेबल में लेके आते हैं, ये वाला ओके ओके कॉलम। यस यस Okay. Understood lookup value. Do you want to do hands-on on it, or shall we continue? सर वेब Yeah. यूआरएल का कॉलम चाहिए था, तो हमने वहाँ पे उसका वो नहीं, नंबर नहीं डाला ना, कॉलम कौन सा कॉलम चाहिए। अभी सपोज मैंने नहीं, ये यहाँ पे नंबर नहीं डालते। यहाँ पे हम डायरेक्टली वो कॉलम कॉल करते हैं। हमको इंडेक्स नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती कॉलम। डायरेक्टली कॉलम As टूल्स से compared दोनों to- कॉलम सेलेक्ट किए, और कंट्री हाँ, कॉलम डायरेक्ट सेम सेम था, इसलिए वो उसी से सर्च किया, और अगर सेम होगा तो वो मतलब ये वाला, ये कौन सा रिजल्ट देगा। हाँ, यूआरएल का अगर सर्च वैल्यू मैचिंग नहीं रहेगा तो एन वो आएगा। NA आएगा। Correct. सो इंस्टेंट ने का कॉलम टूल मीन्स ने का वो कॉलम का ये दूसरा नहीं का टेबल ले सकते का डायरेक्ट कॉलम टूल लेने से बेटर ये सिर्फ कॉलम के दूसरे ऊपर टेबल ही का वैल्यू ले ये सकते करना हैं, बट पड़ेगा आपको कॉमन कॉलम चाहिए ना, इसलिए मैंने कॉलम टूल्स लिया। अभी अगर कंट्री जो कॉलम है, ये अगर मेरे ओके वैल्यूज किसी और टेबल में प्रेजेंट है तो वो टेबल यूज कर सकते यस तो दूसरा टेबल सपोज ने को शीट वन है अपना उधर होगा तो वो ले सकते हो वैसे हैं। हाँ, सेम ले सकते कंट्री हैं ना, कंट्री लेकिन कॉलम शीट वन चाहिए में आपके पास कंट्री नहीं है। राइट। ओके ओके हाँ, इसीलिए वो नहीं दिया। तो दोनों मैच आप होना ले चाहिए सकते हो। मीन्स हाँ, मैच होना चाहिए। हम मैचिंग रिजल्ट्स के बेस्ड ही हमको रिजल्ट चाहिए ना, मैचिंग वैल्यू के बेस्ड ही रिजल्ट चाहिए ना। Right. यानी कि जो फर्स्ट पैरामीटर और सेकंड पैरामीटर सेम होना चाहिए मीन्स इधर वेब है और उधर कंट्री है अभी वैसे ही दूसरा टेबल लिया तो भी चलेगा लेकिन उधर भी कंट्री होना चाहिए सेकंड वाला हाँ, पैरामीटर कॉमन कॉलम फर्स्ट होना है चाहिए, कॉमन कॉलम होना चाहिए दोनों टेबल के बीच में। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कॉलम टूल्स में भी कंट्री है, फाइनेंशियल सैंपल में, राइट। ओके सेम एग्जांपल आप लुकअप वैल्यू करके शीट वन शीट टू जो है, जिसमें एम्प्लॉय कोड है कॉमन कॉलम, बेस्ड ऑन यस दैट आप कॉलम्स पॉपुलेट कर सकते ओके हैं। एनी अदर क्वेश्चंस फॉर लुकअप? सो मीन्स चार पैरामीटर सर एंटर करने पड़ेगा ना फर्स्ट वाला टेबल 4 पैरामीटर्स की। अभी ऊपर चार है ना कॉलम टूल वेब दूसरा कॉलम टूल कंट्री और तीसरा अपना टेबल का नाम और चौथा ये नहीं चार हाँ, कंडीशन है नहीं नहीं, ये तो इग्नोर कर सकते हो, ये सिर्फ हैंडल करने के लिए ब्लैंक्स। ओके ये नहीं चाहिए तो ऐसे भी रख सकते हो। ओके सो तीनों का मीनिंग क्या है फर्स्ट वाला मीन्स हाँ, जैसे कि ना कि जो एंटर वर्ड रिजल्ट बोलते कॉलम। हैं ओके हाँ, रिजल्ट कॉलम सेकंड वाला जिसके साथ कंपैरिजन कॉमन करना कॉलम। है कॉमन हाँ, और थर्ड वो वाला है। भी कॉमन Correct. थर्ड ओके गॉट हाँ, हाँ. So that was lookup. Uh, let's go ahead and see the other calculations.
So we'll take format tomorrow. It needs some explanation. We'll take concatenate, combine values, contain string, related, and exam. Yeah. So I'll remove this as of now. We'll use concatenate. Yeah. Now concatenate. What is concatenate? The same thing, merge columns that we do, right? In the Power Query editor. That's the same for concatenate. But uh, here we can only combine two columns or two values. That's it. Yeah. No other columns can be added. No special characters or a delimiter can be added using concatenate. Yeah. So my personal suggestion is instead of using concatenate, we can use ampersand sign. Yeah. Let's take it here. So text column one. Yeah. So I need to combine title column with, sorry, I didn't use the DAX function. Concatenate. Yeah. So concatenate title with, let's say, product. Yeah. Like this. So only text one and text two. Yeah. So either it can be a column or it can be a static value. So let's say, alhamdulillah, segment. Yeah, like this. Okay. So here, if you see, mm, okay. So here, if you see, I'm combining the two text, the actual value with a static value. It can be a static value, or I can combine it with what did I combine it with? Country, for example. Yeah. So like this, it will go on increasing. Yeah. Because for each segment, I have 5 countries. Yeah. So it is combining all that and then giving me the results. Right. Now we have concatenate X as well. Yeah. So remember, you can filter. If you have a X means you can filter that value. Yeah. So let's say I only need to concatenate if the title is enterprise. Right? So I'll say filter financial sample title is equal to enterprise. What will happen? Only for enterprise it will combine. Yeah. And then give you the results. There you go. Yeah. If you see here, it's giving me a bizarre result. That's strange. What is the individual value? Okay. It's like this. That's strange. Maybe there's a glitch in my Power BI, but what it should do is it should only give for enterprise. Yeah. So if it should only concatenate where the title is enterprise. Yeah. So what it is doing actually is it is concatenating with each of the country and then giving you the results. But for some reason, it's repeating n number of times. I don't know. Okay. All right. So that is what concatenate is. Similar to concatenate. Now, you saw that there's a restriction in concatenate. That means you can only add 2 columns at a time, right? So instead of concatenate, as I suggested, what you can do is you can use the ampersand. That is the and sign. Yeah. So I can add a space if I want. I can go on adding the country column. I can add a text. Yeah. And I can go on adding n number of values in n number of format or pattern that we need using the ampersand. Yeah. So instead of concatenate, using ampersand is the better option. Yeah. Then you have combine values. What is combine values? Here, what you can do is you can add a delimiter
let's say semicolon, and then you can go on adding n number of columns together. Yeah, so let's say I'll say country, comma, title, comma, product. So if I use it here, you'll see the results. Yeah. So the delimiter that I had added is what that separates the columns. Yeah. If I say space and then colon space and then enter, it will give me results like this. Yeah. So combine values is more useful than concatenate. Okay. Well, again, content string, we'll have to take it with if or else. Yeah. So we will leave that for tomorrow's session. Let's take what is related, what is exact. Yeah. Related means if there is a table that is related to the current table, you can bring in the values using related. Yeah. So the same example, instead of lookup, I can also use related. Yeah. So if you see, if there is a relationship between the two tables, I have a relationship here, column tools to financials. What I can do is in the financials table, I can use the related and then bring in a column. Yeah. For example, I just need to check whether the column values of country from column tools and from the financial sample, both of the values are same or not. This is what I need to find. Yeah. So I can use exact. Yeah. In Excel, you might have used equal to sign to check whether the values are same or not from two tables, right? So the same way you can use it here. Yeah. Okay, so for this country, I need to check whether the value is same as it is here in the column tools table. Yeah, so what I will do is I will say exact. Okay, exact is to match the two columns. Okay, so I'll use country from financials table. Now I need to use country from the column tools table. But you see, as soon as I start typing in, the column tools table is not populating, right? So in this case, you can use related to call the column from another table. It is not giving me. That's strange. Related. Yeah, because I have related financials with column tools, not the financial sample. So let's relate that as well. So once, yeah, so you for using a related DAX function, you need to make sure that the relationship is active, right? So now if I go ahead and use related, you'll see column tools comes up, right? I need to call the country column from from the column tools table. Now, what would be the result? What would be the output of this exact DAX function? It would return you true if the value matches. It will return you false if the value doesn't match. There you go, right? So let's do a test here, okay? Now, if I go to the column tools, I'll go to the query. I'll remove one country from this, okay? So I don't need France. So I'll remove it from here. I deselect it from the slicer, hit close and apply. Yeah. So now France would be missing. So I should get false here, right? Because in column tools, the France country is not there. The row is not there. There you go. Right. So wherever it is matching, it would give you the results. Wherever it is not matching, it would give you false. Yeah. That is what exact is and related is. Okay. Yeah. Clear till here, everyone? यस सर एग्जैक्ट और रिलेटेड अलग अलग नहीं यूज कर सकते ना, एक साथ ही यूज करना पड़ेगा.
अलग अलग यूज कर सकते हैं ना। एग्जैक्ट में हमने रिलेटेड क्यों यूज किया, क्योंकि हमको उसको मैच करना था एक कॉलम से जो दूसरे टेबल से आ रहा है। अगर सेम टेबल के दो कॉलम्स मैच करने हैं तो रिलेटेड की जरूरत नहीं है। ठीक। क्या? हम्म। और सर जैसे कॉन्केटेनेट है तो उसमें सर मुझे हाँ फॉर एग्जांपल मुझे मेल आईडी क्रिएट करना है। मेरे पास पर्सन का हाँ। नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। तो उसमें तो एक हम्म, स्पेशल कैरेक्टर @ होता है और हमें स्पेस भी निकालनी होती है और प्लस हम्म। डोमेन ऐड करना होता है। तो ये सारी कंडीशन रहेगी तो मुझे ट्रिम की भी जरूरत होगी और इसका लोअर केस की भी जरूरत होगी और इसका कॉन्केनेट की भी जरूरत होगी। चलो तो एग्जाम्पल। हाँ, तो उस टाइम पे मैं उस कैसे हर वक्त मुझे हर एक टेबल का कॉलम ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या? जैसे मैं एक्सेल में कैसे लिखती हूँ कॉन्केनेट, पहले ट्रिम लिखती हूँ, लोअर लिखती हूँ, फिर कॉन्केटेनेट करती हूँ और वो डायरेक्टली वो हो जाता है। तो इसमें हर एक का टेबल प्लस कॉलम नेम ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं। चलो मैं आपका अभी नाम आप बोल रहे हो इस फॉर्मेट में रहेगा, समझो वेस्टर्न फॉर्मेट में रहेगा, कॉमा स्पेस ऐसा नाम, ठीक है। हम्म। और एक डालते हैं स्पेस, ठीक है। ये हम्म। आपका एक टेबल होगा। हम्म। अभी इसको मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तो आप पावर क्वेरी एडिटर यूज करो जो इजी है, राइट। मैं जाऊंगा इसके क्वेरी में, एडिट क्वेरी। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूंगा इसको स्प्लिट, किससे, हम्म। डेलिमिटर दैट इज कॉलम्स। हम्म। मुझे ईमेल आईडी बनाना है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ। मुझे ये ओरिजिनल नाम भी रखना है। तो मैं क्या हम्म। करूंगा, फर्स्ट इसको डुप्लीकेट करूंगा फिर इसको स्प्लिट करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो ओरिजिनल नेम चला जाएगा, राइट। हाँ। सो हाँ। कॉमा, लेफ्ट मोस्ट डेलिमीटर, ओके, ठीक है। अब मुझे हम्म। पता है कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट नेम है इसमें फर्स्ट में स्पेस है, तो राइट यू विल यूज ट्रिम, स्पेस निकल गया, राइट। अब मुझे ईमेल आईडी कैसा बनाना है, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम और फिर @ जो भी कंपनी का हम्म। आईडी रहे, राइट। सो मुझे हम्म। फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट नेम में सिलेक्ट करूंगा, सेकंड नेम सिलेक्ट करूंगा, मर्ज कॉलम्स बोलूंगा, यहाँ पे सेपरेटर रहेगा डॉट, हम्म। यहाँ पे रहेगा, लेट्स गिव दिस न्यू कॉलम नेम, नेम, ठीक है। अब ये आ हम्म। गया। अब इसको मुझे एक कॉमन और स्टैटिक @email ID ऐड करना है, समझो @tcl.com करना है, ठीक है। तो मैं क्या हम्म। करूंगा, ट्रांसफॉर्म में, फॉर्मेट में, ऐड सफिक्स, यहाँ पे मैं बोलूंगा @tcl.com। ये मेरा हो गया ईमेल आईडी तैयार, राइट। अब ये सेम चीज मुझे करनी है फ्रंट एंड में, क्या कर सकते हो, लेट्स सी दैट। So let's take this table name table, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉलम बनाऊंगा जहाँ पे मैं सर्च करूंगा पोजीशन, राइट, ठीक है। अब हम्म। मुझे क्या करना है, यहाँ पे तीन चीजें करनी है। स्प्लिट कॉलम बाय डेलिमीटर जो है वो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला में अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको कैसे यहाँ पे लाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कॉमा का पोजीशन, सो I will say del, वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, डेलिमीटर। हम्म। I will say find कॉमा, कॉमा सर्च करना है मुझे किसमें, फुल नेम में, राइट। मेरा स्टार्ट हम्म। पोजीशन रहेगा 1, रिटर्न रहेगा 0। देन मैं वेरिएबल बनाऊंगा, अभी हमको ये पोजीशन लेके एक्सट्रैक्ट करना है लास्ट कैरेक्टर्स, राइट। सो वेरिएबल हम्म। बनाने की जरूरत नहीं है, आई विल रिटर्न इट, आई विल से लेफ्ट ऑफ फुल नेम, करेक्ट। यहाँ पे हम जब लेफ्ट यूज कर रहे थे तो हमने स्टैटिक नंबर डाला ऐसा, राइट। सो इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, ये, क्योंकि ये क्या स्टोर कर रहा है, ये एक वैल्यू स्टोर करेगा मेरे लिए,
राइट, और वही वैल्यू मैं यहाँ पे रिटर्न करूँ. If I use it here, there you go, right? अब मुझे क्या करना चाहिए था, ये कॉमा के साथ मुझे दे रहा है जबकि मुझे कॉमा नहीं चाहिए, राइट? तो मुझे इस पोजीशन से एक माइनस करना है. सो मैं ये फाइंड -1 करूँगा. ये जैसे ही मैं करूँ, यहाँ पे सिर्फ लास्ट नेम आ गया, राइट? अभी सेम ये क्या हो गया मेरा, लास्ट नेम, करेक्ट. अब मुझे अगर सब कुछ इसी में करना है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ईमेल आई, ठीक है. अब इसी में मैं सब करूंगा. सो लेट्स यूज दिस अगेन इन अ वेरिएबल. तो ये हो गया मेरा लास्ट नेम, ठीक है. सिमिलरली और एक वेरिएबल del2 मैं फाइंड करूंगा स्पेस, या सर आप लेफ्ट क्यों ले रहे हैं, वो लेफ्ट फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मुझे स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट में से मुझे फाइंड करना है, मुझे एक्सट्रैक्ट करना है कैरेक्टर बिफोर कॉमा. हमको लास्ट नेम चाहिए ना यहाँ पे, तो मैंने लेफ्ट लिया क्योंकि लास्ट नेम आता है फर्स्ट यहाँ पे. यस. सो जो पावर क्वेरी एडिटर में फर्स्ट कैरेक्टर है ना, उसके जगह पे हम लेफ्ट लेते हैं, ठीक है. पहले हम ये देखेंगे कि इसका पोजीशन हमें बराबर दे रहा है या नहीं. तो मैं सिर्फ अभी टेम्पररी जो डेरिमीटर है, सो 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट. तो ये बराबर दे रहा है, राइट. अब मैं क्रिएट करूंगा वेरिएबल फर्स्ट नेम. फर्स्ट नेम में मैं क्या करूंगा, राइट लूंगा. वाई? बिकॉज मुझे इस डेलीमीटर के बाद, मतलब स्पेस के बाद का नाम चाहिए, राइट. सो अगेन फुल नेम. अब ये नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह कौन सा वेरिएबल लूंगा मैं, del2, ठीक है. लेट्स सी फर्स्ट नेम बराबर दे रहा है या नहीं. फर्स्ट नेम वेरिएबल है यहाँ पे, there you go. If I hit enter, मुझे यहाँ पे क्रिस देखना चाहिए, नहीं. Why it is not giving you? अच्छा, उसमें से भी माइनस करना चाहिए. 1 सेकेंड. del2 का पोजीशन क्या आता, 1 2 3 4 5 6 7, राइट. इसके बाद का चाहिए. सो दैट मीन्स +1 करना पड़ेगा. इधर भी सेम, 6 7 8 9 10 11, या +1 करना पड़ेगा del2 में. सो दिस वुड बी +1. अब हम फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है. यहाँ भी -1 करते हैं. ओके, इसके लिए तो बराबर आ गया, इसके लिए बराबर नहीं आ रहा है. व्हाई इज दैट सो? अगर मैं बोलूँ -1, सो दैट मीन्स फ्रॉम 10, सो फ्रॉम राइट 10. ओके, राइट में यहाँ पे ये 10 जा रहा है, दैट्स व्हाई. कॉमा का पोजीशन लेफ्ट के लिए काम किया, बट राइट के लिए वो स्पेस का काम नहीं किया, क्योंकि अगर इसमें देखोगे तो 11 वो दे रहा है, 11 -1 10 होता है. तो दैट मीन्स फ्रॉम राइट हैंड साइड 10 कैरेक्टर्स मीन्स इट इज गिविंग यू लाइक दैट, ठीक है. इसके लिए हम सोचते हैं कि कैलकुलेशन में कैसे ला सकते हैं, बट पावर क्वेरी एडिटर वुड बी द बेस्ट वन. अब ये होने के बाद, लाइक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आने के बाद, वी विल क्रिएट वन मोर वेरिएबल, फुल नेम, ठीक है. इसमें हम बोलेंगे फर्स्ट नेम एंड डॉट एंड लास्ट नेम, ठीक है. और एक वेरिएबल बना देंगे फॉर ईमेल आईडी,
सो उसमें हम स्टोर करेंगे @tcl.com, ठीक है। और फिर फाइनल रिजल्ट में हम बोलेंगे फुल नेम एंड ईमेल। ये हो जाएगा ईमेल आईडी। अब ये मुझे फर्स्ट नेम के लिए करेक्ट देगा, सेकंड नेम के लिए इनकरेक्ट देगा। ये हमको देखना है कैसे कर सकता है, राइट। ओके, बट यहाँ पे आपने देखा विद इन वन कैलकुलेटेड कॉलम मैंने सारा कैलकुलेशन कर लिया और रिटर्न कर दिया रिजल्ट्स। या दैट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग वेरिएबल। इससे क्या होगा, आपका रिपोर्ट का परफॉर्मेंस भी अफेक्ट नहीं होगा। मोर यूज ऑफ वेरिएबल्स, लेस परफॉर्मेंस इफेक्ट। बट सर डोमेन अगर सबके अलग अलग होंगे, सपोज अभी 2 रिकॉर्ड के टीसीएल है, 2 के अलग हुए, 2 के अलग हुए, ऐसे मेरे पास 100 डेटा है। हाँ, तो ये तो बहुत। उनका डोमेन का डेटा अगर आपके पास है, कोई कॉलम में डोमेन रहेगा, तो आप वो हाँ कॉलम से कॉल कर सकते हो अगेन एक्सट्रैक्ट करके। ये तो मैंने हाँ मैन्युअली बट डाला ना, स्टैटिक डाला। हाँ बट कैसे तो एक्सेल में कैसे सामने सामने है तो वो दिख रहा है मुझे कहीं पे, मतलब नहीं है, मैं फिल्टर लगा के डायरेक्टली चेक कर रही हूँ, लेकिन इसमें कैसे समझ में आएगा मुझे? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो इसमें आपके पास वो कॉलम रहेगा ही। अगर एक्सेल में वो कॉलम ऑलरेडी प्रेजेंट था डोमेन का, कि इस हम्म, बंदे का डोमेन है AMS, इस बंदे का डोमेन है यूरोप, या दूसरे बंदे का डोमेन है US, राइट। हम्म, सो हम्म, उनका उस डोमेन के अकॉर्डिंग ईमेल आईडी चेंज होना चाहिए, तो उसका हम्म, एक आपको रहेगा ना, एक डोमेन कॉलम तो रहेगा। सो बेस्ड ऑन दैट डोमेन कॉलम, अगर वही वैल्यू वही टेक्स्ट चाहिए आपको @करके, तो वो ला सकते हम्म, हो। या फिर बेस्ड ऑन दैट डोमेन आपको एक कंडीशनल कॉलम बनाना पड़ेगा, दैट मींस इफ डोमेन इज AMS देन गिव मी दिस, ऐसा वाला हाँ कॉलम बना के फिर ये उसको यहाँ सकते पे हैं। पॉपुलेट कर सकते हो। ओके। ओके। और सर डू नॉट समराइज और सम, सर कहीं कहीं पे डू नॉट समराइज मतलब क्या आना चाहिए रिजल्ट? तो भी डोंट नंबर्स समराइज दिखेंगे। मतलब रो वाइज रो रिजल्ट आएगा। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, ये जो रिजल्ट है दिस इज डोंट समराइज, मतलब बिना समराइज किए हुए जो एक्चुअल रिजल्ट है वो देगा। समराइज मतलब क्या, कि चैनल पार्टनर्स मैक्सिको में टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, सिर्फ दो कॉलम लिए, कंट्री हम्म, और टाइटल। सो ये बाकी के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी का जो रो डिस्ट्रीब्यूशन है वो निकल जाएगा। हम्म, सिर्फ मेक्सिको के लिए चैनल पार्टनर्स का टोटल क्या है, तो ये सारा सम अप होगा इन चीजों के लिए। लाइक लेट्स से आई सिलेक्ट मेक्सिको हियर एंड चैनल पार्टनर्स। तो अभी इसके लिए मेरे पास कितने रोज है, 20 रोज, राइट। हम्म, ये हम्म, 20 रोज का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का जो टोटल है वो आएगा एज अ समराइज्ड रिजल्ट, सम, ठीक है। हम्म। Yeah. अगर वो दिखाना है तो आप सम रखो उसको, लेकिन आपको ऐसा रो वाइज रो डेटा दिखाना है कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इसका 250 था, 10, 3, 10, ऐसा वैल्यूज दिखाना है, इंडिविजुअल वैल्यूज, सो यू विल से डोंट समराइज। ओके, डोंट समराइज में रो रो वाइज पूरा डेटा रहेगा। करेक्ट, समराइज में समराइज रिजल्ट। कंट्री मैक्सिको और वीटीटी प्रोडक्ट है तो उसका ऐसा। हाँ, राइट, उसके समराइजेशन। और सम बोलेंगे तो सारे कॉलम्स का। करेक्ट। अच्छा। और सर डेट फंक्शन में आपने 1 और 2 ये दो पैरामीटर्स पास किए थे। 1 का मीनिंग था आपने डेट लिया है, और सेकंड वाला किस लिए था? कहाँ पे पास किया था 1 और 2? डेट मेजर, डेट डेट का जो मेजर जो क्रिएट किया था वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डे डे नंबर है। जैसे कि आज कौन सा डे है, 6th, सो आप 6 हाँ डालोगे तो 6th डे आएगा, डे नंबर। हाँ, तो 1 और 2 क्या है? टू टू डे नंबर है क्या, हाँ, कि 1 डे नंबर है? वहां पे डेट के कॉलम में सर डेट था और ईयर था, मंथ था और ईयर था। सी, अगर मैं डेट लिखता हूँ, राइट, हम्म, मैंने ईयर लिखा 2014, इसका मतलब क्या है, मेरा ईयर इज 2014। मंथ मैंने हाँ 1 डाला, इसका मतलब क्या है, जनवरी। डे मतलब 1, राइट। अगर फर्स्ट डे है मतलब जनवरी का पहला दिन, 2 हाँ। मतलब सेकेंड जन, 3 मतलब थर्ड जन, फोर्थ जन, राइट, 23rd जन। समझ रहे हो, डे नंबर। आज 6 है ना, अच्छा, उसका कॉलम तो से यहाँ पे लेना 6 देना है। नहीं था, खाली ये नंबर्स, मतलब हम डे दे रहे हैं, डे का कौन सा डे है। हाँ, सेम मैं बोल रहा हूँ कि आप ईयर को कॉलम कॉल कॉल करो, मंथ नहीं है तो नंबर डालो,
या फिर मंथ का कॉलम डालो। डे का हमारे पास कॉलम नहीं है तो मैंने स्टार्टिंग डे डाला, दैट इज 1, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। 2 डाला तो सेकेंड डे ऑफ एवरी मंथ। सर डेट का मेजर एक बार ओपन करेंगे क्या, वो दिखाएंगे क्या? डेट का कॉलम बनाया हमने, वो हाँ डेट यहाँ का, पे मेजरमेंट। हाँ, हाँ डेट, हाँ डेट। ये डेट न्यू ना, यहाँ पे ये बोल रहा हो ना आप? नहीं नहीं, खाली डेट का। पहली डेट फिजिकल डेट है, वो हमने चेंज किया है। रुको, यहाँ पे मैं वापस लाता हूँ उसको। ईयर ऑफ करंट डे, ठीक है। मंथ ऑफ डेट फील्ड, और यहाँ पे मैंने डे दे दिया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मंथ रहेगा और जो भी ईयर रहेगा उसमें डे रहेगा 2। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डेट न्यू देखोगे अभी, फाइनेंशियल्स, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो गया, डे क्या हो गया, सेकंड हो गया हर एक इसके लिए। Got it? और 1 और 2 जब देते तब? मैं वही बोल रहा हूँ, 1 मतलब फर्स्ट डे, सेकंड मतलब सेकंड डे, थर्ड मतलब थर्ड डे। समझ रहे हो? हाँ समझ रही हूँ, लेकिन 1,2 ऐसा दिया तो? 1,2 ऐसा दे ही नहीं सकता ना, दिया है वो आपने। मंथ के लिए। नहीं, वो हाँ मंथ के लिए। ये मतलब 1 मतलब यहाँ पे मंथ इज 1, दैट इज जनवरी। मंथ हाँ का नंबर होता है ना 1 to 12, हाँ। वो है अच्छा, यहाँ पे। सो आप यहाँ पे मंथ और कंफ्यूज हो डे। रहे हो, 1,2 हाँ दिया मैंने ऐसा। हाँ 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 तो यहाँ पे मंथ हो गया 1, दैट इज मंथ इज जनवरी, और हाँ। डेट इज 2। सेकेंड डे, अच्छा हाँ, ठीक वो है। यहाँ पे कैलेंडर टेबल में आपने शायद देखा रहेगा, ये ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसका मतलब ये है, देखो डेट का फॉर्मेट कैसा है, ईयर, देन द मंथ, एंड देन द ईयर, देन द डे। डेट। हाँ ऐसा है फॉर्मेट उसका। सो ईयर, हाँ। उसके बाद जो भी नंबर रहेगा वो रहेगा उसका मंथ, उसके बाद जो भी रहेगा वो रहेगा उसका डे। नहीं, मैं इससे पहले जो था ना वहाँ पे कंफ्यूजन था मुझे, 1 और 2, तो 1 मीन्स मंथ और 2 मीन्स डे, सेकेंड। यस, ऐसा। हाँ सर, कोई भी अगर हम पैरामीटर जैसे अगर पास करते हैं 1 2 3 जो भी, तो वो हमारा कॉलम से रिलेट नहीं करता ना कोई भी जो टेबल नहीं में। नहीं नहीं, इंडेक्स को नहीं, वैसा नहीं होता, एक्सेल जैसा नहीं होता। अच्छा। 1 या 2 आप जहाँ पे भी दो दोगे, अगर डेट हम्म। में दे रहे हो तो दैट मीन्स इट्स अ डे, मंथ, जहाँ भी जिस पोजीशन में दे रहे हो। टेक्स्ट अच्छा। कॉलम में आज हमने देखा इंस्टेंस नंबर या फिर पोजीशन नंबर। हाँ। ठीक है, इतने ही 3 या 4 एग्जांपल्स है उसका। ओके सर, ठीक है सर। ओके। सर वो करंट डेट कहाँ से लिया था कॉलम? करंट डेट हमने बनाया ना बैकएंड में, पावर क्वेरी एडिटर में, याद है? टुडे डेट टाइम डॉट लोकल नाउ करके बनाया था, वो है करंट डेट। दिखा सकते हैं क्या किधर है वो? मुझे लगा यहाँ से बनाया था। वो यहाँ पे भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये यहाँ पे ये कस्टम कॉलम याद है? हाँ हाँ हाँ। दिस इज ओके। करंट डेट, इसका नाम मैंने करंट डेट दिया। ये कॉलम आपको सेम अगर फ्रंट एंड पे बनाना है ना, पावर क्वेरी एडिटर में नहीं बनाना है, तो टुडे फंक्शन यूज कर लो, कैलकुलेटेड कॉलम। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं करता हूँ, ठीक है। इधर मैंने अगर टुडे फंक्शन यूज टुडे। किया तो क्या आएगा मुझे, करंट डेट आएगा। आएगा यस। क्या? ओके। तो उधर फॉर्मेट दिया डायरेक्ट DDMMYY, तो वो टाइम नहीं आएगा, टाइम जाएगा। करेक्ट, करेक्ट, यस। टाइम नहीं आएगा फिर। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। All right. Okay, then so let's stop here for today. We'll continue tomorrow, yeah?